मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां करने वाला भारत आलमी मुजरिम है। 13 जनवरी 2021 को लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में एक मुबाहिसे में बरतानी अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भारत की इस प्रोपेगेंडे से कि मसला कश्मीर और इंसानी हुकूक भारत का अंदरूनी मामला है को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ये भारत का दाखिली नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों और कवानीन के मुताबिक आलमी मसला है। Quite frankly, this is not a matter of left and right. This is a matter of right and wrong. Now, we're not against India. It's a huge country, but that does not mean we should not hold the Indian government to account for its abusive behaviour, especially in Kashmir. And we also reject any argument that in Kashmir, the Punjab, that these are internal matters and of no concern to those outside. Because human rights are actually a universal matter and a universal concern. And that was unambiguously established 75 years ago this week, just across the road when the United Nations had its first meeting of its Assembly and its Security Council. And Britain, of course, has a special place in raising this, not just because of our history, but also because of the concern of thousands of our constituents who are desperately worried about their families in Jammu and Kashmir. EU डिसइंफोलैब जैसे घटिया इकदामात के जरिए भारतीय हुकूमत अक़लियतों खास तौर पर सिखों और मुसलमानों के मजहब के खिलाफ जो नफरत फैला रही है, इस नुक्ते को उजागर करते हुए बरतानी रुकने पार्लियामेंट ने भारत का भयानक प्रोपेगेंडा इन अल्फाज में बेनकाब किया। But in the world we live in, it's incredibly important. What is this government doing to tackle the use of social media sites, and in particular WhatsApp, which uses to stoke the flames of division and messages that we see to further weaponise Islamophobia in the region? Online communications is now part of every modern-day warfare. We regularly see states and leaders, not just Trump, use online propaganda as part of their arsenal. भारतीय फाशिज्म और रियासती दहशतगर्दी इस कदर बढ़ चुकी है कि कोई भी बाज़मीर शख्स, सहाफ़ी, तज़ियानिगार या सियासी लीडर अगर मोदी गैंग या हुकूमत पर तनकीद करे तो बदनाम ज़माना काले कवानीन का इस्तेमाल करते हुए उस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। And on the flip side, Kashmiris' freedom of speech online is suffocated to the point that any criticism against the Indian government risks terrorism charges. So will the Minister commit to work internationally on the issue of online propaganda, fake news, the spread of racism and the measures taken to silence news coming from Kashmir? The now decades-long fight for Kashmiris to determine their own future looks further from reality than ever before. मकबूजा जम्मू और कश्मीर में प्रेस और प्रिंट मीडिया और आवाम पर सख्त पाबंदियां हैं। काबिज भारतीय आलमी कवानीन की परवाह किए बगैर तवील फौजी मुहासरे के दौरान तोसी पसंदी और नस्ल परस्ती के मकरू मंसूबे पर अमल करते हुए अपने मजालिम की खबरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। Without the UN rapporteurs allowed into the region and every report out of the region being censored, how can anyone give this House any assurance that a genocide in Kashmir isn't actually taking place? भारतीय जबर, पाबंदियों और मकरू अज़ाइम को बेनकाब करते हुए एक और रुकने पार्लियामेंट ने बहस में हिस्सा लेते हुए बताया, We should be clear about what these lockdowns actually mean. No foreign journalists are being allowed into Kashmir by the Indian government. Thousands of people have been arrested, face harassment and imprisonment without due cause. निहत्ते और मासूम कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय रियासती जबर, तोसी पसंदी और नस्ल परस्ती के मकरू अज़ाइम से पूरी दुनिया आगाह हो चुकी। भारतीय प्रोपेगेंडा, मकारियाँ और साजिशें बेनकाब हो गईं। बेनकाब होने वाला भयानक चेहरा किसी रियासत का नहीं, एक माफिया या गैंग का है जो किसी भी असूल, कानून या इंसानियत पर यकीन नहीं रखता, मासवाए जबर, फाशिज्म और इंतहा पसंद नस्ल परस्ती के, जिसका अंजाम इबरतनाक होने जा रहा है।